और राइट जी, अब हम चाहते हैं कि इस रोड को किसी तरह इनफाइनाइट बनाया जाए, और आइडिया ये है कि जब हमारी गाड़ी चलते 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 एंड ऑफ द रोड के करीब पहुंचेगी, हम उसको कोड की मदद से उठा के वापस इसकी इनिशियल पोजीशन पे रख देंगे। सो उससे यूजर को ऐसा लगेगा कि गाड़ी चलती जा रही है, सड़क वैसे ही है और कहीं ख़त्म नहीं हो रही सड़क, हालांकि ये सड़क 100 के बाद ख़त्म हो जाती है। तो अभी तो मैं ज़रा अपनी गाड़ी की ओरिजिनल पोजीशन रिव्यू करूं। आप देखेंगे कि इस रोड पे पीछे भी काफ़ी सारी जगह है, तो अगर मैं इस कार को और पीछे ले आऊं, अपनी कार को यहाँ ले आएँ, तो ये सिनेरियो भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ इसकी पोजीशन है 00-45। ये याद रखिएगा, 00-45 इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा काम हमने ये करना है कि हम इस कार को हाथ से पकड़ के आगे ले चलते हैं। सो माई कार इज लिटरली गोइंग फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, ये तमाम बिल्डिंग्स में से होती हुई और आगे और आगे, और बिल्कुल आखिर में जब हम पहुंच जाएंगे तो फिर इसकी पोजीशन देखते हैं कि जब हम यहाँ पहुंच जाएं, समवेयर ओवर हेयर, जहाँ अभी रोड थोड़ी सी बाकी भी है, लेकिन सिनेरियो और पीछे कर लेते हैं, समवेयर ओवर हियर, जहां बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी हैं लेकिन एम्प्टी रोड बाकी है। तो यहां इसकी पोजीशन है 00703। इसको मैं अगर 700, ओके, सो 00700। सो आइडिया ये है कि जब आपकी गाड़ी 00700 पे पहुंचे या जी उसका 700 से आगे निकल जाए, तो उसको उठाएं और पीछे 00-45 पे ले जाएं। -45 है जी, या so it goes here 00-45। ये काम हम कोड में करेंगे। We will do this work in the code, और कोड इसका है कार स्क्रिप्ट, और यहाँ पे बाकी कोड हम ऐसे ही रहने देंगे, नीचे मजीद कोड ऐड करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारा Z, कार का Z एक्सेस 700 से ऊपर तो नहीं निकल गया। So if transform dot position dot x, sorry Z, if the Z is greater than 700, तो आप इसका Z चेंज कर दें। अब यूनिटी डायरेक्टली वो Z चेंज करना अलाउ नहीं करता, लेकिन आप इसमें से उस पोजीशन को पूरा ले सकते हैं और उसको चेंज करके वापस असाइन कर सकते हैं। सो आई विल गेट द ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन विच इज एक्चुअली अ वेक्टर 3। वेक्टर 3 इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें x, y, z 3 वैल्यूज होती हैं। v के अंदर हमने इसकी पोजीशन ले ली और फिर हमने v डॉट z को सेट कर दिया -45 पे। x और y को चेंज नहीं किया, तो जो भी उसकी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे की पोजीशन थी वो वैसी रहेगी, सिर्फ z उठा के हम उसका पीछे ले आएंगे। सो हम उसको -45 सेट करते हैं और वापस इस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को हम असाइन कर देते हैं v। ये थोड़ी सी कोड रिक्वायरमेंट है, उन्होंने डायरेक्टली z को असाइन करना अलाउ नहीं किया, लेकिन जब भी हमारी गाड़ी 700 पे पहुंचेगी वो उठ के -45 पे वापस आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये चीज काम करती है कि नहीं। आई रन दिस गेम, ऑब्वियसली आई विल हैव टू ड्राइव थ्रू द होल रोड एंड ऑल द बिल्डिंग्स एंड ऑल द कार्स। राइट साइड पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं तो इसका z चेंज होता है, आपको नजर आ रहा है कि मैं ऑलरेडी 120 पे पहुंच गया हूँ। तो इस पे जरा नजर रखिए। ट्रैफिक कार से ऑलरेडी टक्कर शक्कर लग रही है। आई हैव रीच्ड 280। सो वो लिमिट्स हमारी दाएं बाएं वाली वैसे ही काम कर रही हैं जैसे हम पहले काम कर रहे थे, एंड आई विल ट्राई टू रीच 700 टू सी के उसके बाद क्या होता है। सो प्लीज गेट रेडी, वी आर ऑन 560, 580, 600, 630, 640 and tapak. What happened? You saw a jerk, you saw some buildings appear, traffic disappeared, which is not very cool, but oh, some cars are flying here and there, but actually I got back to the original position. Why do I have an empty road now? Because the traffic has gone through and fallen down, और वो लिमिट ऑफ द रोड से नीचे जाके तबाह हो चुकी हैं, लेकिन हमारी गाड़ी चलती जा रही है। वी आर रीचिंग 560, 570 अगेन। So let's see 700 पे क्या होता है, and 700 now. So it's a little weird कि दूर buildings horizon पे appear हो रही हैं, लेकिन this road has actually turned unlimited. अब ट्रैफिक disappear हो गई है, उस ट्रैफिक को जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा, यही चेक ट्रैफिक में भी लगा दें कि अगर ट्रैफिक भी 700 से आगे जाती है तो उसको उठा के वापस हम -45 पे रख दें, और ये तमाम गाड़ियों के लिए साइकिल चलता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यही पूरा चेक विजुअल स्टूडियो में जो हमने यहाँ लगाया है
ये मैं अपनी ट्रैफिक स्क्रिप्ट में भी लगा दूंगा, जो कि अभी फिलहाल और कुछ नहीं हो रहा ट्रैफिक में। सो अगर मेरी ट्रैफिक की गाड़ी भी 700 से ऊपर जाती है तो वो गाड़ी भी उठ के मेरे पीछे आ जाएगी, और जब मैं वापस उठ के खुद वापस आऊंगा तो आई विल फाइंड द रोड इज नॉट एम्प्टी। अब चेक करते हैं कि क्या हमारी रोड इनफाइनाइट हो गई है। ये बहुत सारी गाड़ियां 700 पे आ गई थी मेरा ख्याल है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी ओरिजिनल पोजीशन 700 से आगे होगी। So I have traffic on the road and I am going to 700. Will take a few more seconds. We have reached above 400 now. So the traffic is behaving. So you can see the traffic is disappearing and you disappear as well. And when you come back to the original position, the disappeared traffic has appeared as well. What are you doing here, fellow? So some cars got turned a little and then they actually went and hit the building. हमें कोशिश ये करनी होगी कि ट्रैफिक को हिट करने के बाद अगर वो टर्न हो जाए तो वो कहीं और ना चली जाए. You see, they were going outside. So once they go outside, they will never come back. Anyway, so now we have an unlimited road where not only us, but the traffic is also going through an unlimited loop. So if we leave this car running, the traffic as well as my cars will go through an infinite loop and they will come back and they will come back and the player will think कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त कोई अनलिमिटेड रोड है या कोई हाईवे है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही. So जब तक आपका स्कोर ख़त्म नहीं होगा, फ्यूल ख़त्म नहीं होगा, गाड़ी नहीं टूटेगी, आप उसको चलाते जाएंगे. So this is what we have done in this section. We have made this road car racing game infinite for my car as well as for the traffic cars here.